Hello everyone, I'm Kunj Joshi and I'm a programming coach at Programming with Maurya. Welcome to Programming with Maurya. तो अब तक हम लोगों ने देख लिया है कि हमें ये IDE कोड ब्लॉक्स कैसे इंस्टॉल करनी है और कैसे हमें हमारा फर्स्ट प्रोग्राम बनाना है. ठीक है. नाउ दिस प्रोग्राम वी हैव मेड दिस प्रोग्राम एंड वी हैव आल्सो ran it. I'll run it once again to show you what it does. And we can see that it prints hello world on our screen. ओके. तो ये प्रोग्राम बेसिकली सबसे बेसिक प्रोग्राम होता है सी में एंड इट प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड फॉर अस. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है. सो वी कैन इन्फॉर फ्रॉम ओवर हियर कि प्रिंट एफ जो फंक्शन है वो हमारे स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट करने में हेल्प करता है. एनीवेज आई विल कम टू दैट लेटर. ओके. We don't know what this code means, why we have used the hash over here and why we have used this curly braces or why we have used this parenthesis. ये semicolon क्यों लगाया है, return का क्या मतलब होता है. We know nothing about this right now, so I'll explain it to you next. Okay. So now we will look at the structure of a C program. Okay. So structure of C program, a C program is divided into different parts and I'll explain each and every part using the lines. Okay. These parts can be called as preprocessor directives, initialization of functions or function declaration, and code writing or the body of the code. Okay. I'll explain each of these three parts. Okay. यहाँ पे इनिशियलाइजेशन ऑफ फंक्शंस के साथ साथ हम इनिशियलाइजेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं. ओके, आई विल एक्सप्लेन दैट. So now we have the structure of C program which is maintained by this all of these symbols. जो curly braces होते हैं, opening closing curly braces है, semicolon है, opening और closing parenthesis है, we have the double quotations. Okay. So मैंने पहले भी बताया हुआ था कि C supports structured programming and all of this help us in managing structured program, making a C program structured. Okay. So these symbols are really useful to help us making a C program structured. Okay. Now these are the preprocessor directives. Okay, ये जो hash में हम लोगों ने लिखा हुआ था green color का जो हो गया था, these are the preprocessor directives or the libraries as you might want to call them. I know this is really complex terminology, so don't worry, I'll explain it to them. But इतना याद रखना कि C program के syntax में सबसे पहले ये आते हैं. We always need to include the standard input output or standard library. Okay. This stdioh or stdlib.h or the preprocessor directives for our C program to run. Okay. Then we have int main. Okay. Int main ये होता है function declaration या function initialization. यहाँ पे हमने int क्यों use किया, main ही क्यों नाम दिया, ये parenthesis क्यों use किया, ये सब I will explain. Okay. And then we have body of the code. Okay, here you can see कि हमने printf लिखा हुआ है. As I said, printf is used to print anything on a screen. Okay, then we have used the semicolons over here. ये return use किया हुआ है. But as you can see कि हमेशा जो body of the code होता है वो इन curly braces के अंदर consisted रहता है. ठीक है. तो body of the code is always return. Body of the code or body of the data structure or body of the function that we are defining is always return in between these two curly braces. All right. तो अभी तक तो इतना क्लियर हो गया होगा. Now I'll explain what are preprocessor directives. So preprocessor directives, as I had said, ये जो green color के होते हैं और always the first statements that we need to write in any C program, syntax में जो सबसे पहले statements होते हैं, these are preprocessor. Okay, preprocessor directives are initialized by using this hash symbol and they define the library we are using. Okay, I know this is really going to be complex for you to understand, so I'll explain it with a simple example. Okay, इतना बस याद रखना कि preprocessor directives हमेशा C program में सबसे पहले include किए जाते हैं and they are initialized using this hash symbol. So let's imagine that we are building a house. Okay, so a house when built needs basic facilities to live. We can install devices such as light bulbs and showers, but they won't work if we don't have an electricity connection or a water lines connection. ये बेसिकली कहना क्या चाहता है कि अगर हम कोई घर बना रहे हैं, ठीक है, तो हम लाइट बल्ब या ट्यूब लाइट या शावर्स, टैप्स, ये सारे डिवाइसेस तो लगा देंगे, बट क्या ये काम करेंगे अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन या वाटर लाइन का कनेक्शन ही ना हो? राइट. You understand that a light bulb would be rendered useless if it won't be able to glow, and it won't be able to glow if we don't have an electricity connection. Okay, or a shower will be rendered useless if it won't be able to throw water at us, and it won't be able to throw water at us if we don't have a water line connection. Okay, so these are the basic facilities we need to live if we have a house.
वी कैन से कि ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है या ये जो लाइब्रेरीज है, these are like the electricity or water line connection to the code. The code will not run when these libraries are not there. Okay. अगर हमने नेसेसरी लाइब्रेरीज को इंक्लूड नहीं किया होगा तो हमारा कोड एग्जीक्यूट या रन नहीं कर पाएगा. Okay, so these are really important. You can understand the importance of these libraries from this example that I've given. Okay, these are really important libraries. So we have given two libraries, stdio.h and stdlib.h. Okay, these are the two of the most basic libraries. I'll explain both of these libraries. stdio.h stands for standard input output. Okay, it includes basic functions such as printf, scanf, etc. प्रिंटफ तो मैंने आपको समझाया कि आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ भी प्रिंट करने के लिए वो हो जाता है. स्कैनएफ क्या होता है? तो स्कैनएफ हो जाता है यूजर इनपुट के लिए. ओके, तो यूजुअली जो प्रोग्राम्स होते हैं वो कोई बेसिक इनपुट आउटपुट पे नहीं चलते. इफ आई एम रनिंग दिस हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, ओके, मैं अगर ये हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ तो इट विल गिव मी दिस हेलो वर्ल्ड आउटपुट. सिमिलरली इफ यू विल रन दिस हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम तो ये भी आपको सेम आउटपुट ही देगा, ये भी आपके स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट करेगा. Then what is user input and customized output? I'll explain it to you with an example. Okay, let's say that this is age calculator. How old am I? myagecalculator.com करके एक website, and let's consider that this is coded in C. Okay, this is just an example. Let's consider this and it is coded in C. So I'll show you if I am putting my birth date. Okay, this is 31st. ये मेरी birth date है 31st December 2001. Okay, and if I enter the time and click on calculate, okay, then it will give me my age. Okay, your age is 20 years 1 month 2 days 22 hours and 4 minutes. Okay, now this is not the only thing that I want to show you, because यहाँ पे मैंने अपना इनपुट तो दिया, मगर अगर आप अपनी बर्थ डेट का इनपुट देते हो then the age would be different. I'll show you for some random birth date. Okay, let's say 14 March 2003 एंड 4:13 PM पे बॉर्न हुआ कोई बंदा होगा तो उसकी एज हो जाती है अभी. यू कैन सी दैट हिज एज इज 18 years 10 months and 19 days, right? So this is the thing that for any input we will get a customized output. This is what is meant by user input and customized output. और scanf और printf का यूज उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा होता है for user input and customized output. Okay, I'll just show you. Okay, so as a light bulb needs electricity to glow, printf and scanf need stdio.h library included to work. So this light bulb will need electricity to glow. The shower will need a water lines connection to work. Similarly, the printf and scanf will need stdio.h library to work. Next, we have standard lib.h. Okay, stdlib.h, that is the standard library. It implements the basic features talked about. Okay, so basic features जैसे कि memory allocation है, process control है, ठीक है. We had talked about recursion, we had talked about pointers. ये सारे जो library, ये सारे जो functions है, ये जो सारे features है, वो standard library हमें implement करने में help करता है, ठीक है. So like a human needs oxygen to live, a C program will need stdlib.h to execute. Okay, I'll just show you what will happen if we don't include these libraries. Okay, so ये रहा मेरा एक दूसरा प्रोग्राम है जहाँ पे मैंने इन लाइब्रेरीज को इंक्लूड नहीं किया है. लेट्स रन. ओके, अब आप कहेंगे कि ये तो हेलो वर्ल्ड हमको दिखा रहा है दैट इट इज स्टिल रनिंग. ओके, बट लेट्स टेक अ लुक ओवर हियर. ओके, ये जो हमारा कंसोल है ये क्या बता रहा है हमें? देन as you can see, it has shown us two warnings over here. Just a minute. Okay, it has shown us two warnings over here. You can see implicit declaration of function printf. Okay, and here is incompatible implicit declaration of built-in function printf enabled by default. Okay, क्योंकि हम एक IDE का यूज कर रहे हैं. Alright, we can see कि ये run तो हो चुका है, but over here we are getting two warnings. Okay, implicit declaration of function printf और implicit declaration of built-in function printf enabled by default. ओके, क्योंकि हम एक IDE का यूज कर रहे हैं इसलिए ये printf enabled by default हो जाता है, डिफॉल्ट में ही एनेबल कर देते हैं. बट वी आर गेटिंग दिस वार्निंग्स. अगर हम नोटपैड में रन कर रहे होते then this would have given us a fatal error.
जहाँ पे ये रन नहीं करता है। Here you can see that we are getting 2 warnings. ये इसलिए रन कर रहा है क्योंकि हम ID का यूज कर रहे हैं. So this is one more benefit of ID. All right. Let's continue. So just a minute. So next is function initialization और function declaration. Okay, हमारा function है int main. Okay, this is a declaration. Declaration का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को declare करना. हम यहाँ पे एक main function को declare कर रहे हैं. Any variable ending with the parenthesis during a declaration becomes a function and has its own additional functionality and processes as opposed to simple data. Okay, what does this mean? तो कोई भी अगर वेरिएबल इससे डिक्लेरेशन में एंड हो रहा है देन इट बिकम्स अ फंक्शन. ओके, मगर ये आगे क्या ऐड किया है जो हैज इट्स ओन एडिशनल फंक्शनैलिटी एंड प्रोसेसेस एज अपोज्ड टू सिंपल डेटा. ओके, देन आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कोई भी सिंपल डेटा होता है, ठीक है. लेट्स से दैट वी हैव ओनली अ सिंगल चॉकलेट. ओके, तो उस चॉकलेट पे कोई ज्यादा फंक्शनैलिटीज नहीं होती, वो एक चॉकलेट बस खाने के लिए एक चीज होती है. बट इफ वी आर यूजिंग अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, ओके, तो उसकी फंक्शनैलिटीज ज्यादा हो जाती है बिकॉज देर आर मोर देन वन चॉकलेट्स इन द बॉक्स ऑफ चॉकलेट. So this is how functions work. Okay, function has its own additional functionalities and processes as opposed to simple data. यानी कि फंक्शंस बेसिक वर्क नहीं कर, फंक्शंस में बेसिक वर्क हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और वो एक से ज्यादा काम एफिशिएंटली कर सकते हैं. सो दैट इज व्हाई फंक्शंस आर बीइंग यूज्ड. ओके, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स इन सी व्हिच कैन बी इम्प्लीमेंटेड, वुड बी लर्न लेटर ऑन. सो फंक्शंस ही एक टाइप की डेटा स्ट्रक्चर नहीं होते, और भी डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, वी लर्न लेटर ऑन. The word int here describes the what kind of value the function will return. Okay, so अभी हम word by word इसमें देखते हैं. Okay, तो हमारे पास है ये वर्ड इंट. ओके, इस लाइन में. तो व्हाट डज दिस इंट मींस? इंट वी कैन से इज इंटीजर. ओके, इंटीजर. अभी ये हमें यहाँ पे इंट डिस्क्राइब कर रहा है कि हमारा आंसर क्या होगा, कि जब ये फंक्शन पूरा रन हो जाएगा तब व्हाट वुड बी द आंसर, और व्हाट आंसर शुड वी एक्सपेक्ट, या व्हाट काइंड ऑफ आंसर वी शुड एक्सपेक्ट. तो यहाँ पे इंट हमें कहता है कि आफ्टर द मेन फंक्शन विल रन वी विल एक्सपेक्ट the integer type of answer. Okay, so I'll explain it to you by an example. So compare a declaration of function with the name of a person. Okay, तो मैं अगर आपको पूछता हूँ कि आपका नाम क्या है, then you will tell me कि मेरा नाम होगा मार्क या जॉन. Okay, so you can say that this is John Cena, you know him. So इनका नाम होगा जॉन, या his name will not be 23 or some integral name. Okay, मैं अगर आपको आपका नाम पूछता हूँ तो आप नहीं बताएंगे कि मेरा नाम 23 है या मेरा नाम 17.5 है. आप बताओगे कि मेरा नाम जॉन है या मेरा नाम मार्क है. ओके, और वॉट एवर योर नेम इज. सो आप ये इस तरह से बताएंगे. ओके, so this is what we can expect from a function, or we can expect from a declaration of a function. After this function is run, we don't expect the output to be कोई character or a string, but we expect it to be an integer. इसलिए हम int को add करते हैं main के सामने. ठीक है. So similarly, when the function main runs, the output value should be an integer. Okay. Here the main word main is used to indicate the computer. Okay. Now comes the word main. Okay. तो कंप्यूटर जब भी हमारा प्रोग्राम रन करता है तो इसको ड्राइवर प्रोग्राम की तरह दिखता है. It always searches for the word main before running any program. So here it is used to indicate the computer that this is the function which should be executed first. Okay. हमने हमारे पास अभी तो एक ही सिंपल फंक्शन है, बट देयर विल कम चांसेस where we would be having more than one function. Okay, तो कंप्यूटर हमेशा मेन फंक्शन को ढूंढता है और हमेशा सबसे पहले मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है. So in any program, main function is always executed first. All right. Now let's come to the body of the code. Okay, our program means nothing without the desired functionality established. अभी हमारे इस प्रोग्राम का मेन मोटिव ये था कि हम हमारे स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर सकते हैं. ठीक है, अभी तक हमने जो कुछ भी सीखा वो उतना इंपॉर्टेंट है जितना हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना इंपॉर्टेंट है. मगर हमारा प्रोग्राम अगर हेलो वर्ल्ड को प्रिंट ही नहीं कर सकता देन इट इज यूजलेस. ओके, so this is established in the body of the code. The body of the code is as much important as other parts of the code. So this is the most important, if I can say, portion of the code. Okay, body is enclosed in closed in curly braces. As you can see here, that we have used curly braces to enclose this body.
Each set of curly braces determines a new subcode or a section of the code which needs to be executed independently. Okay, क्योंकि ये एक कर्ली ब्रेसेस के पैर के अंदर इंक्लूड किया गया है, then it would be run independently from some other program or from some other subcode which would be enclosed in some other pair of curly braces. Okay, ये कंप्यूटर को एक इंडिकेशन देता है कि इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो प्रोग्राम है उसको दूसरे कर्ली ब्रेसेस वाले प्रोग्राम से इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट करना है. Okay, so this is the body of the main function as described ahead. तो हमने वैसे भी ये देखा कि ये main function की body है. All right. Notice how each line is ended with the semicolon. Okay, we can see over here कि यहाँ पे एक semicolon use किया गया, यहाँ पे एक semicolon use किया गया. The semicolon indicates a line break and asks the computer to execute the next line of code. Okay, so whenever the computer will incur a semicolon, okay, ये सेमीकोलन कंप्यूटर को इंडिकेट करेगा कि अब ये लाइन खत्म हो चुकी है, इसको तुमने एग्जीक्यूट कर लिया है, अब अगली लाइन पे चले जाओ. सो सेमीकोलन इज रियली इंपॉर्टेंट, यू कैन सी राइट नाउ. ओके, फर्स्ट फंक्शन इज printf फंक्शन. इट इज यूज्ड टू प्रिंट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन. ये मैंने अभी तक आपको बहुत बार बता चुका है कि printf कोई भी चीज को स्क्रीन में करता है. ठीक है, यहाँ पे printf फंक्शन हेलो वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन प्रिंट करता है. तो आप देखो कि यहाँ पे हमने हेलो वर्ल्ड \n लिखा हुआ है. So this prints hello world on the screen. Notice how hello world \n is enclosed in these quotations. Okay, this indicates a string and we would discuss it later. So ये hello world को हमने क्यों double quotations में डाला हुआ है and why this is a string, ये हम बाद में discuss करेंगे. And we will also discuss why this \n would be eliminated when the when our program will run. Okay, तो आपने देखा होगा कि अगर ये program run होता है then this \n is not shown on the screen. ठीक है, so I'll explain that why this is not shown later on. Okay, now let's come to the next line that has the word return. Okay, so the word return in the next line returns the answer expected from the function. Okay, हमने इसके पहले के पेज में ये डिस्क्राइब किया कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे फंक्शन से. ओके, तो हमारे मेन फंक्शन से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट इट रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू. ऑलराइट, तो अगर ये एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, okay, then we are writing return 0 because return returns an integer value, return returns the answer to the function. Okay, return is a keyword which is used to give us the answer to the function. Okay, as we expected an integer output of the main function. Okay, that's why we this return keyword is 0. Okay, return the function is returning 0. All right, so this is it. I hope कि आपको ये पूरा कोड एक्सप्लेन हो चुका होगा. I'll show you over here that the difference. Okay, अगर मैं इसको रन करता हूँ, right, if I'm running, then now let's see that when I'm running this, the hello world and this \n is not being shown, but उसकी जगह एक लाइन यहाँ पे ली हो जाती है. ठीक है, now I'll show you something else. So if I remove this \n and when I run this, see, you can see the change. Okay, so this is the thing कि पहले एक line leave हो जाती थी. Okay, I'll show you how this work \n works actually. Okay, okay, if I run this, just a minute. I'm sorry, actually I had not put this semicolon here, इसलिए नहीं हो रहा था. Okay, let's run this. I don't know what the problem is. Okay, I'm actually sorry क्योंकि पहले ये वाला जो प्रोग्राम था वो रन हो रहा था. Okay, now if I will run this program, okay, here you can see कि hello world और उसके दूसरे लाइन में my name is कुंज जोशी लिखा हुआ आ रहा है. Okay, now if I remove this \n and then when I run it, okay, अब देखो hello world और सेम लाइन में ही my name is कुंज जोशी लिखा हुआ आ रहा है. So I hope so वो \n का मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा कि \n क्यों एलिमिनेट हो जाता है. ओके, दिस \n मींस कि अब ये लाइन खत्म हो चुकी है, अब अगली लाइन में आपको जो चीज है वो प्रिंट करनी है. ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस \n in C programming. All right, I think so I'm making sense and I think so that you understood everything that I explained it to you.
Okay. Thank you.